Hello guys, welcome to Garuda Academy. Fly like an eagle into IT industry. Today's topic is client server architecture. If you are a API tester, then you know what is the client server architecture. Or if you are attended a interview for API testing or API development as a API developer, the most asked question is, are you aware about the client server architecture? If you are aware about the client server architecture, please explain the client server architecture. What is meant by client server architecture? What are the different types of client server architectures? So our today's topic is client server architecture. We are going to see what is meant by client server architecture, what are the different types of the client server architecture. Let's start. Basically, first we see what is the client, what is meant by server. Client means PC, smartphone, laptop, from where the client or the end user sends the request for the data, and that request goes to the database and collects the data from database through APIs. There are different types of APIs through internet IPs, TCP APIs, or other REST APIs through web servers, like that. We will see the types. Definition: from the client means through browser, PC, mobile, we send the request to the server. When server receives or takes the request and then process it and creates a response data and response to the client is known as a client server architecture. Basically, in simple language, response request from client and response from server, and this process is called as a client server architecture. In technical language, when end user sends request, API was triggered and request was sent to the server, means database present at on the server side. When request received at server side, appropriate SQL query was run and required data was fetched from database as per request validations, and once the response data was prepared, it sends to the client or front end, and it displayed on the client machine. तो बेसिकली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है? तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्लाइंट मीन्स अपना एंड यूजर हो गया, वो एंड यूजर अपने मशीन से, और उसका जो मशीन रहता है, लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, मोबाइल हो गया, तो उसके जरिए वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को. तो सर्वर मीन्स सर्वर जहाँ पे डेटाबेस प्रेजेंट रहता है, तो वो रिक्वेस्ट सर्वर थ्रू डेटाबेस में जाता है और वहाँ डेटाबेस में एसक्यूएल क्वेरीज रन होते हैं. तो किस एपीआई के लिए कौन सी एसक्यूएल क्वेरी रन होती है वो हम अगले स्लाइड में देखेंगे. तो वहाँ पे रिक्वेस्ट आने के बाद वो एप्रोप्रिएट एसक्यूएल क्वेरी रन होती है और डेटा फेच होता है डेटाबेस से, और फिर वो सर्वर थ्रू क्लाइंट के पास वापस आता है, और इस तरह क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर चलता है. Queries run as per API request. For get, select query was run. For post, insert query was run. For put, update query was run. For patch, update query was run. For delete query was run. तो अभी जो हम API रिक्वेस्ट भेजते हैं, अलग अलग API रिक्वेस्ट रहती है. गेट रिक्वेस्ट हो गया, पोस्ट रिक्वेस्ट हो गया, पुट हो गया, पैच हो गया, डिलीट हो गया. तो गेट रिक्वेस्ट जब हम भेजते हैं तो डेटाबेस में सिलेक्ट क्वेरी रन होती है. पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं तो इंसर्ट क्वेरी रन होती है. पुट एंड पैच भेजते हैं तो अपडेट क्वेरी रन होती है. डिलीट रिक्वेस्ट भेजते हैं तो डिलीट क्वेरी रन होती है. तो जो आर्किटेक्चर है तो उसके डिफरेंट टाइप्स है. वन टायर आर्किटेक्चर है, टू टायर आर्किटेक्चर है, थ्री टायर आर्किटेक्चर है. इस इमेज में आपको दिख सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस, वो हम एक्सप्लेनेशन वो देखेंगे. ओके, तो बेसिकली टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर्स आर थ्री टाइप्स ऑफ client server architectures: one tier architecture, two tier architecture, and three tier architecture. We will see one by one.
Okay, first, one tier architecture. In one tier architecture, a database server was not present. There was only front-end data set was present, and data was stored on local system only. That is the data, the client will be same and the database also present on that client machine only. There is no server is present in one tier architecture. For example, MP3 player, MS Office, the data was stored only into the local system, or that is the client machine only. There was no server is present. In two-tier architecture, there is a client machine and the server is present. In two-tier architecture, there is client, business layer, and database was present. But business logic and database logic are existed आइदर ऑन क्लाइंट और सर्वर। तो इसमें भी क्या होता है कि टू टायर आर्किटेक्चर में जो डेटाबेस लेयर होता है और बिजनेस लेयर मतलब एपीआई जो रहते हैं वो एक ही इसमें क्लाइंट सर्वर पे ही स्टोर होंगे या अलग अलग हो सकता है कि क्लाइंट अलग हो सकता है और सर्वर अलग हो सकता है। ऐसा है, मतलब क्लाइंट हो गया और सर्वर साइड पे डेटाबेस होगा। तो जब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो सर्वर के पास जाएगा और डीबी में से डेटा लेके आएगा तो थ्रू टीसीपी। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन टिकट रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग टू टायर आर्किटेक्चर: easy to design all applications, maximum user satisfaction, implementation of homogeneous environment, best performance. Drawbacks of using this: poor performance due to grow number of connections of each user, less security, all clients are totally dependent upon the manufacturer database, less portability means this architecture is totally dependent upon the particular database. Next is three-tier architecture. In three-tier architecture, there is client, API, and database was present. On APIs and database are present on different servers. When users send request from front end, that is from client machine, the API request encoded in code was get triggered and it goes to server database and collects required data and then sends it to the front end. The three-tier architecture structure was UI layer, then logic layer, business logic layer, or we can call API layer, and server database. Every website has a APIs. Due to APIs, we get data on web UI. API is a mediator between web UI and database. तो ज़्यादातर अभी जितने भी मोस्टली थ्री टायर आर्किटेक्चर्स यूज करते हैं तो इसमें क्या रहता है, तो क्लाइंट मतलब अपना लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, मोबाइल हो गया, तो एंड यूजर क्या करता है उससे क्लाइंट मशीन बोलते हैं हम उसे, तो क्लाइंट मशीन से वेब थ्रू रिक्वेस्ट भेजता है। तो रिक्वेस्ट भेजने के बाद उसके पीछे जो कोड में एपीआई रिक्वेस्ट एनकोडेड की रहती है तो वो ट्रिगर हो जाती है। वो एपीआई रिक्वेस्ट ट्रिगर होने के बाद वो सर्वर को कॉल करती है और सर्वर में जाने के बाद सर्वर में अप्रोप्रिएट एसक्यूएल क्वेरी रन होती है और डेटा रिट्रीव होता है डेटाबेस से और फिर वो लॉजिक लेयर के पास आता है। फिर वो लॉजिक लेयर मतलब एपीआई के पास आता है एपीआई सर्वर पे और वहां से फिर फ्रंट एंड पे जाता है क्लाइंट मशीन के पास। ये हो गया थ्री टायर आर्किटेक्चर। तो इसमें थ्री टायर आर्किटेक्चर में डिफरेंट लेयर्स होते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर्स, client tier, or we can call it as UI. Client handles this layer. Application layer, and also we can call it as a business layer or API layer, controls the application. Database layer, data layer, server takes care of this layer. Database present at the server end. Advantages of using this: best performed data integrity, improved security to tier architecture, hide database structures. There was one more type of architecture, that is a n-tier architecture. We see one tier, two tier, three tier. It is n-tier. There is a number of tiers into the architecture: client tier, internet, server tier, middle tier, and data tier. It is a multi-tier architecture.
It is a scaled form of three-tier architecture. Entire representation, application, processing and data management functions are isolated from each other in this tier. तो इसमें क्या होता है, जो अलग अलग सर्वर्स हो गए अपने, तो अभी क्लाइंट सर्वर हो गया, उसके बाद बिजनेस लॉजिक हो गया, फिर डेटाबेस लॉजिक हो गया, डेटा टायर, बिजनेस टायर, इट्स अलग अलग रहते हैं, आइसोलेटेड होते हैं. I hope you like the information. If you like the information, please like, share and subscribe. Thank you.